76 upon minus 67 a negative number? Explain. Is this a negative number or a positive number? Tell me. This is a negative or positive? Yes, Ma'am, anybody? Avni? Ma'am, negative. Negative Ma'am, it is number. negative Why? because 67 is negative. Ma'am, Okay, mute yourself. Mute yourself. Okay, it is a negative because there is one negative sign with the 67. Okay. Okay. Next is represent the following rational number on the number line. Now we have to make a number line. Okay. Now first is 5 upon 2. How we make up number line? This is a positive number. Listen very carefully. This is a positive number. Now we have to see the denominator. We have to see the denominator. When we make a number line, first is 0 because we have to make the positive side. So this side is a positive. So no need to make a negative side. Only a small little line you have to spread it here. Okay, then write 0. Then what is the denominator here? 2. So we have to write 2 as a denominator in every number. We have to start with a 1, 1 upon 2, 2 upon 2. Okay, 2 upon 2 means 1. Then 3 upon 2, 4 upon 2, 5 upon 2, 6 upon 2. Okay, so 4 upon 2 is 2, 6 upon 2 is 3. And we want 5 upon 2. Where is 5 upon 2? This is a 5 upon 2. So we have to circle it 5 upon 2. Okay, means whatever the denominator is same in all. And we have to start with 1, 1, 2, upper number. In numerator, we have to start the counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, like that. Okay, see the other. Understood all of you? yes, ma'am. Yes. And next one. If I write minus 8 upon 5, minus 8 upon 5, now this is a negative. This is a negative number. Now we have to make a negative side. So 0 is here because this is a negative side. Okay? So minus 8 upon 5. Again we start with a minus 1 upon 5. Denominator is same. Minus 2 upon 5. Minus 3 upon 5. Minus 4 upon 5. Minus 5 upon 5. This is 1. Okay, like that. We have no, I have no space here, so I'll write it here. Minus 6 upon 5. Minus 7 upon 5. Minus 8 upon 5. Okay, now we want minus 8 upon 5. Is it clear? You have to make a number line straight. Understood all of you? Yes, ma'am. Okay. Those who raise their hand, please hand down. Afterwards, I'll tell you. Minus 1 upon 3. Okay, minus 1 upon 3. So again, minus number is there. So 0 here. Minus 1 upon 3. Minus 2 upon 3. Minus 3 upon 3. Minus 1. So what we want? Minus 1 upon 3. Minus 1 upon 3 is here. So we have to circle it here. Okay. Okay, ma'am. Okay. One more part. If I write 2 upon 7. Now positive number. So this is 0. 1 upon 7. 2 upon 7. 3 upon 7. 4 upon 7. So what we want? 2 upon 7. Okay. Denominator is same. Okay. I'll explain question number 3 again. Okay, those want. Okay. Question number 3. Those who want. Question number 3 is plus 76 upon minus 67. Question is a negative number rational number or positive? Up is positive. So if we remove the positive sign 76 upon 67, there will be a minus. So it is a negative rational number. So ये क्या हो गया? Negative rational number. Okay, because one minus is there. And we have to
and we have to this minus keep it up. So minus 76 upon 67. Clear? हम इस माइनस को ऊपर भी ले सकते हैं और नीचे भी, पर एक माइनस है ना, खत्म नहीं होगी. ठीक है, ये नहीं खत्म होगी, इसलिए ये नेगेटिव नंबर हो गया. ओके, नाउ नेक्स्ट इज next exercise. देखो, reduce the following rational numbers into standard form. ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखो स्टैंडर्ड फॉर्म. अब हमने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं, हम इसको रिड्यूस करते हैं लोअर्स्ट टर्म में. फर्स्ट आ गया 35 अपॉन 14. 35 अपॉन 14. ठीक है, तो ये किस नंबर से कटेगा, 7 से. 7 2 जा 14, 7 5 जा 35. तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5 अपॉन 2. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको कटिंग करके लोअर्स्ट टर्म में लेके आते हैं. क्लियर? वेरी गुड तन्वी. नेक्स्ट, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स द लोएस्ट टर्म. Okay, ma'am. Next is minus 81 upon 108. Now tell me by which number it will be. 81 and 108. We have to try with the 3. Okay. 3 से करो. 3 2 जा 6. 21 3 7 जा 21. फिर 3 3 जा 9. 1 18. 3 6 जा 18. Now by which number it will be? 27 36. 3 से कर लो. 3 9 जा 27. 3 12 जा 36. फिर अगेन 3 3 जा 9. 3 4 जा 12. सो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -3 अपॉन 4. ठीक है, हमारे पास आंसर क्या आ गया, -3 upon 4. Very good, Vedika. Understood all of you how to do a standard form? Okay. Shall we move further? Yes, ma'am. Next is check whether the following are equivalent rational numbers or not. Equivalent. How we take out the equivalent? 12 upon 54 and 54 upon 12. Are they equivalent? हमने कैसे करना है, और yes, or we cut it, we solve it here and we solve it this. Okay, separately we have to solve them. If the answer is same, then it is equivalent. If answer is not same, this is not an equivalent fraction. Yes, Ravinder, very good. So 12 upon 54 and 54 upon 12, it is सामने दिख रहा है कि 12 ऊपर है, इसका 12 नीचे है, इसका 54 नीचे है, डिनोमिनेटर में है, उसका 54 न्यूमरेटर में है. So this will not equal, है ना? Yes, or by cross product. Yes, yes, Shipriya, we can do like that also by cross product. 54 into 54, 12 into 12. But this multiplication is lengthy. So you can do like that. First you have to cut it. If then afterwards you want do it cross multiplication, then do it. Clear? Yes, it is not equal. Next is you do this 11 upon 33 and 5 upon 7. So 5 upon 7 we cannot cut. 11 upon 33 we can cut. 11 1 जा 11, 11 3 जा 33. So ये आ गया 1 upon 3 और ये क्या आ गया 5 upon 7. 5 upon 7. तो ये इक्वल नहीं है. So it is not No, equal. ma'am. Yes, it is not equal. No. So this is a sign of not equal. Equal को आपने बीच से कट कर देना है. This is sign of not equal. ठीक है? Okay, ma'am. Okay. Now one main question. अब आपका क्वेश्चन है, you have the rational number 2 upon 9. You have the rational number 2 upon 9. Okay. Now what you have to do, express 2 upon 9 as a rational number with the denominator. Means आपका इसके अंदर denominator जो है वो 54 आना चाहिए.
क्या डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए 54, ठीक है। 2/9 आपका रैशनल नंबर है और डिनोमिनेटर 54 आना चाहिए। तो आप क्या चीज सॉल्व करोगे, क्या मल्टीप्लाई करोगे, क्या डिवाइड करोगे कि 54 आ जाए। हमारे पास डिनोमिनेटर 9 दिया है और आंसर में 54 दिया है। सो नो एक्स, देयर विल बी नो एक्स। इस क्वेश्चन में हम एक्स नहीं करेंगे रविंदर। 9 के टेबल में 54 कब आता है? 9 6 यस, गुड सीरत, 9 6 सो वी राइट 6 हियर। हमने देखना है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। 9 के टेबल में 54 कब आता है? 6 से, तो यही 6 हम ऊपर लिखेंगे। तो 6 2 जा 12, ओके, 6 2 जा 12। these both numbers are equal. Understood all of you? Yes, Yes. ma'am. Okay, I'll give you one more. Do it yourself. I'll give you. If your number is 4/9, your rational number is 4/9, and your numerator is 32 minus 32. Your numerator is minus 32. So what will be in between? यहाँ पे क्या आएगा? You have to tell me. Yes, give me answers. Okay, good, Niharika. Very good. No, Arshpreet. Stuti, wrong. Yes, Arshdeep or Harman, right. Shivpriya, wrong. Wrong, bacha. Navneet is right. Rest all wrong. No. No. Vedika. Tanvi is right. Janvi, Manvi, wrong. Yes, now see it here, okay, how to do it. Now this is minus 32. Minus 32. So what we have to do, 4 के टेबल में 32 कब आता है? 8 के साथ. But आंसर में माइनस है. So you have to write it minus 8 here. Okay, 4 is multiplied by minus 8. It will be minus 32. So we have to write minus 8 it here also. So 9 8s are 72, but minus 72. So answer is minus 32 upon minus 72. ठीक है? Yes. Understood? आंसर में देखना होता है minus 32 है, so हमारा बीच में क्या आएगा? minus 8 आएगा. ठीक है? Now next, do plus 3 upon minus 7 and minus 7 upon 3 represent same negative numbers. क्या ये दोनों सेम नेगेटिव नंबर्स हैं? 3 upon minus 7 and minus 7 upon 3. क्या ये दोनों सेम नेगेटिव नंबर्स हैं? सोच के बोलो. बोलो, क्या ये दोनों सेम नेगेटिव नंबर्स हैं? नो. क्यों नो? बिकॉज इसको हम लिखेंगे, इसका अगर हम माइनस ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा -3/7. ठीक है? और ये हो जाएगा -7/3. ये -3/7 है, ये -7/3 है. तो दे आर नॉट इक्वल. They are not the same negative number. Not the same negative number. Same negative. Clear? Yes, ma'am. Understood all of you? Okay. Now next is compare. Greater or lesser, or which is smaller, which is greater, all things are same. Suppose if I write -1/5 and -1/7. You have to write it here is greater, sign of greater lesser. Okay, -1/5 -1/7. तो इसमें से कौन सा बड़ा होगा कौन छोटा होगा, क्या करना है आपने ध्यान से देखना. ये -1 जो ऊपर वाले नंबर हैं, पहले हम इसको इधर लिख लेंगे, इसको इधर लिख लेंगे.
अब हमने इस 7 को इससे मल्टीप्लाई करना है, इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है। -1 into 7 एंड -1 into 5। यहाँ पे क्या बन गया? -7, ये बन गया -5। सो विच वन इज ग्रेटर? विच वन इज ग्रेटर? बड़ा कौन सा है इसमें? -5. -5 -5 is greater. Why -5 is greater? Because -5 is near to the 0. जो नंबर 0 के पास होगा वो 0 होगा नेगेटिव में, पॉजिटिव में उल्टा। पॉजिटिव में बड़ा नंबर बड़ा है होता है और छोटा नंबर छोटा, पर नेगेटिव में उल्टा हो जाएगा, छोटा नंबर बड़ा और बड़ा नंबर छोटा। सो -5 किसका आ गया? इसका। तो ये हमारा साइन -1। इट मीन्स अब हमने इसमें आंसर भी लिखना है हमने, दिस इज -1/7। Okay, so -1/7 is greater than -1/5. Clear? Yes, ma'am. ठीक है, स्मॉलर, ग्रेटर, लेसर सब अपने ऐसे ही करने हैं।